Have you ever thought that your negative emotions can make you sick? Let me show you some experts talking something in common. Certain emotions cause certain diseases. Yes, anger causes inflammatory disorders more than anything else. Depression is correlated with cancer. Guilt is also correlated with cancer. Repressing things. Yeah, all these fear, anger, guilt, depression are expressions of our inability to feel the pain when we are having it. 80% of autoimmunity that occurs in women. Research and understanding this from different doctors was that they basically believe that before these women got sick, there was actually a certain characteristic in most of them, which was all about not knowing their own boundaries, not knowing how to say no, and repressing and suppressing their emotions and putting everybody else's emotional needs before theirs. The deep link between autoimmune condition and anxiety, or your body in this constant survival mode, you need to cut it out. Otherwise, you're in a disease mode, and that's what I want you to do. Working with my cancer patients, almost 99% of them have had a traumatic event within 6 to 18 months prior to the diagnosis that they have not emotionally dealt with. And it's still this deep-seated almost pain that they just don't know how to process. Forgiving each person by name, letting it go and just say, God, they're all yours. I'm just not going to carry the anger and the bitterness and the resentment anymore. 17, I'm not going to Dr. Patwick Ijewar, a medical director who studied at Johns Hopkins University and a consultant at Howard University in Washington, D.C., stated that many adults who had cancer was directly related to unforgiveness. You can find this by looking at the cbn.com. Refusing to forgive makes people sick and keeps them that way. Of all cancer patients, 61% have forgiveness issues, and of those, more than half are severe. Harboring these negative emotions, this anger and hatred, creates a state of chronic anxiety. One of the major causes of rapid cancer cell mutation is by the presence of negative emotions, which includes hate, grief, डॉक्टर गबोर मेट को अगर आप सुने जाके इंटरनेट पे, उन्होंने एक स्टडी को कोट किया कि 80% ऑफ द वुमेन दे सफर फ्रॉम ऑटोइम्यून डिजीज। वजह क्या होती है उसकी? अपने अंदर अपने इमोशंस को सप्रेस करना। हर तरह का इमोशंस सप्रेस करके रखती हैं वो। एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, गम हो, अगर इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एनीथिंग दे कांट एक्सप्रेस इट। जब वो इन लॉज में जाते हैं तो हस्बैंड के लल्ले तलल्ले, आजकल तो बहुत ज्यादा चीजें इन्वेंट हो गई ना, उसको हर चीज से बचा के रखना है, हस्बैंड को इससे बचा के रखना है। सबसे पहले तो आपको हर किसी को खुश भी रखना है, अपनी वेलबींग को एंड पे रखना है, दूसरों की वेलबींग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जो कुछ बुरा लग रहा है उसको सप्रेस करके रखना है और एंगर को सप्रेस करके रखना है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज देयर इज नो वेयर टू वेंट आउट एंड इट लीड्स टू हर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। वो अंदर से इरोड होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, एंड रिजल्ट क्या होता है? वो बीमार पड़ती है और फिर उसको रिप्लेस भी कर दिया जाता है। आपने कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान, उसको आंखें बंद करके उसमें सुबह दोपहर शाम बस उसको सुन लेना। इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स। कई लोग 7 दिन सुन लेते हैं, कहते मैं नहीं ठीक हुआ। मैं कहता हूं आपने लगता किसी को माफ नहीं किया। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। मैं ये कर दें अल्लाह की खातिर। मैंने ये देखा है कि नफरत जो है वो बीमारी की जड़ है। हेट्रेड इज द रूट कॉज, ठीक है, ऑफ एवरी सिकनेस, एंड अनकंडीशनल लव इज द ट्रीटमेंट। क्या बात, अल्लाह ने हर चीज जोड़े में बनाई है ना, तो प्यार की जिद और नफरत। In this month of Ramadan, forgive everyone. It heals your body, mind, and spirit. Holding on to anger only hurts you, not them. Try to prioritize yourself because you matter.